So it's not as though our schemes work in silos. At the end, where I sit, or where the Secretary, Ministry of Women and Child Development sits, or the Joint Secretary or the Additional Secretary, across all those divisions, we ensure that there is a holistic view and we know exactly where, if there is a lacuna, or if there is even one Anganwadi or one desk, we will know immediately where something is staggering. And क्योंकि आपने टॉयज़ की बात की और दिव्यांग बच्चों की बात की, DIY हाई क्वालिटी सेंसरी टॉयज़, ये शुरुआत कब हुई और क्यों ज़रूरत पड़ा? I had the privilege of also being Minister Textiles, who was in charge of handicrafts in the country. Prime Minister was extremely insistent कि हम विदेश से अपने देश के बच्चों के लिए खिलौने क्यों इंपोर्ट करें, जब हमारे देश में खिलौनों की इतनी विराट संस्कृति रही है, जहाँ पर खिलौना सिर्फ महज एंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं बल्कि कल्चरल ट्रांसलेशन का या ट्रांसमिशन का भी एक माध्यम है. और आज अगर आप देखें तो हमने पोषण भी पढ़ाई में विशेष खिलौने के माध्यम से बच्चे को कुछ सिखाना, उसके बारे में ज़्यादा हमने एक प्रयास या परिश्रम किया है. नमस्कार, आप सभी जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है. इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में वर्तमान की एक बड़ी खबर साझा करेंगे. हाल ही के अंदर का सरकार का एक बयान है आप सभी के अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि को लेकर. उस बयान को भी आपके मध्य में रखेंगे. सभी से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें. चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे तुरंत ही सब्सक्राइब भी कर लें. अब चलते हैं अपडेट की तरफ. राज्य की सरकार को कहा है कि आपकी जो पारंपरिक खिलौने हैं, जो दादा दादी, नाना नानी या फिर माँ या लोकल कम्युनिटी में एक मैसेज कन्वे करने के लिए, एक सीख कन्वे करने के लिए, एक कहानी बताने के लिए, हमने तो इतना भी किया मारिया जी कि हर प्रदेश में लोरी कौन सी सुनाई जाती है खाना खिलाते वक्त, उसको भी असिमिलेट किया है. क्योंकि ये हमारी एक कल्चरल धरोहर है जो खोती जा रही है. तो आज मैं बैठ के मंत्रालय में, इट्स रेयरली स्पोकन ऑफ, मैं आपको बता सकती हूँ किस प्रांत में कौन सा व्यंजन खिलाते वक्त वहाँ पे एक ज़माने में कौन सा गाना गाया जाता था. मैम सुना दीजिए. So I think क्योंकि since you know so many languages, let's have that as well. मैं सुना दूंगी तो कान फट जाएगा, वो अलग बात है. लेकिन I think on a serious note, when you talk about a developed nation, it is not only about the bridges that you can build. It is also the huge mountain of cultural wealth that you have. How much of that can you preserve? So I think when we in the ministry work towards building an infrastructure for children, we don't reduce it to just building a room or just building a creche. We recognize that it is a part of a larger community culture. It is a part of a larger, I think, civilizational context that we can help bridge and bring to the next generation. The community and role of parents as well. They have played an important role. Yes. For the success of Anganwadis. When did you realize that it's important to have that holistic approach? I think what is less spoken about are even issues which are otherwise in a position to grab many headlines. But for those issues to taper down and be available in the rural ramparts is rarely visible. For instance, we have a project called Samvad with Nimhans, where for mental health and support to those who are caregivers, which includes Anganwadis, which includes people who are looking after childcare institutions in the country, we say we are happy to give you a helpline support. Till now, close to 130,000 people have received support from just Samvad, courtesy Nimhans and that one project. For us, what is